हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस द 25th ऑफ जनवरी 2023। So, lack of consultation over setting up of inquiry panel upsets protesting wrestlers, SC wrong in revealing sensitive reports, Rijiju। So what is this talking about? ये तो हमें पता है, lack of consultation over setting up of inquiry panel upsets protesting wrestlers का मतलब है कि हमने कल ही के न्यूज़पेपर में देखा है एंड हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं दैट बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जैसे इंडियन रेसलर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिजभूषण, अगेंस्ट हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। वो उसके प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण, उसके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर अलेजिंग दैट ही हरासेस और abuses women, okay, the women sports persons and wrestlers and all। तो उनके ऊपर ये एलिगेशंस हैं प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण के ऊपर। तो अब कल ये फैसला आया है दैट देयर वुड बी अ पैनल, देयर वुड बी एन इंक्वायरी सेटअप विच वुड बी लेड बाय MC मेरी कॉम, तो ताकि वो देखने के लिए कि वेदर द एलिगेशंस दैट आर बीइंग पुट ऑन ब्रिजभूषण आर एक्चुअली ट्रू और नॉट। तो उसके लिए द प्रोटेस्टर्स, द रेसलर्स हु आर प्रोटेस्टिंग, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनसे कंसल्ट करके चीज़, मतलब कंसल्ट करके इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए। दे आर जस्ट डूइंग इट ऑन देयर ओन। Next is SC wrong in revealing sensitive reports. Kiran Rijiju is our union law minister. And executive और जुडिशरी के बीच में ये जो एक बैटल टाइप चल रहे हैं ओवर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में जो जजेस को अपॉइंट किया जाता है फॉर अ पोजीशन या फॉर अ प्रमोशन, उसके मैटर में लेकर कि पहले NGAC को, मतलब नेशनल जुडिशियल कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, वो तो किरण रिजिजू का कहना है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और IB के कुछ सेंसिटिव रिपोर्ट्स को, इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में पुट अप कर दिया, पब्लिकली उसको डिस्प्ले करा है। तो एडिंग दैट गवर्नमेंट कमेंटिंग ऑन इशूज सच एज NGAC डज नॉट लोअर डिग्निटी ऑफ जुडिशरी। तो किरण रिजिजू बेसिकली हमें बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ही इज़ टॉकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड उनका कहना है कि अगर NJAC का डिस्कशन होता है या ऐसे कुछ फॉर्मेशन होता है तो उसमें कोर्ट का या जुडिशरी का कोई डिग्निटी लोअर नहीं हो रही है। इट्स द सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि द एग्जीक्यूटिव विल अपॉइंट द जुडिशरी, द जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ द कॉलेजियम, बट यहाँ पर अब क्या होते जा रहा है, द कॉलेजियम इज इटसेल्फ अपॉइंटिंग द जजेस। तो ये थोड़ा सा रिफ्टिफ चल रहा है एंड इट इज़ गोइंग ऑन, एंड इसमें बहुत सारे लोग, द वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीश धांकर ने अब इसके ऊपर लेकर कमेंट्स करे हैं। देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने इसके ऊपर कमेंट्स करे हैं, किरण रिजिजू, एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। BJP अगेंस्ट ऑल मेयोरल पोल, फिर से वही बात हो रही है। इसके पीछे की स्टोरी बहुत सिंपल है दैट जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली है वो पहले 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, अब उन तीनों को मिला के क्लब करके एक ही कर दिया। पहले क्या था, नॉर्थ दिल्ली की अलग, साउथ दिल्ली की अलग, ईस्ट दिल्ली की, इस तरीके से था, डिवाइडेड था। नाउ देयर इज ओनली वन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द होल ऑफ दिल्ली। तो इसमें जो है वो मिक्स लीडर्स है, BJP लीडर्स भी है, आप लीडर्स भी हैं, एंड देयर शेयर इज इक्वली फेयर। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से हो ये रहा है दैट मेयर को इलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज किसकी पार्टी का मेयर होना चाहिए, वेदर शुड बी फ्रॉम BJP और फ्रॉम आप। तो ये चीज़ चले जा रहा है, जब से MCD के इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद से ही, आई मीन दिस इज दे आर स्टॉलिंग इट, इट हैज़ बीन मंथ्स एंड अभी तक भी कोई मेयर इलेक्ट नहीं कर पाए हैं। यूथ्स डिफाई बैन स्क्रीन BBC फिल्म। तो जो यूथ्स हैं, BBC डॉक्यूमेंट्री जो है
ऑन मोदी जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको उसके ऊपर बैन करने की बात कही है, लेकिन जो यूथ्स है वो इस बैन को नहीं मानते हुए एंड बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के फर्स्ट एपिसोड को उन्होंने यू नो स्क्रीन करा, और जो सेंटर का कहना है कि इट शुड बी बैंड उसको ना मानते हुए। AI find again for two incidents on December file, that is एयर इंडिया को फिर से दिसंबर फ्लाइट में 2 और इंसिडेंट्स के लिए उनके ऊपर फाइन इम्पोज करा गया। Delhi High Court notifies rules for live streaming proceedings, has notified the rules for live streaming of its proceedings and that of all the subordinate courts in the capital. As per the rules, live streaming will not be allowed in cases such as matrimonial matters, cases of child adoption and child custody, cases concerning sexual offences, matters involving abuse of children, etc. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने, जैसे कि अब नया सिस्टम आया है सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट्स का भी, दैट जितने भी जुडिशियल उनके मतलब केसेस चलेंगे कोर्ट में, that would be live streamed on YouTube for the public also to watch. लेकिन कुछ इसमें restrictions है as per the Delhi High Court, जैसे उनका आया है that ज़्यादातर मुझे ऐसा लगा देखकर कि जो पर्सनल टाइप केसेस है, जैसे कि मैट्रिमोनी केसेस, दो लोगों के बीच में शादी, डिवोर्स, या फिर उसके बीच के लेकर केसेस हो गए, या सेक्सुअल ऑफेंसेस या चिल्ड्रन का अब्यूज़, ये सारे जो है इन केसेस को लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा। Vendor moved down by car, man behind wheel arrested. BJP tug of war stalls mayoral elections. Again वही चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस करी। BJP blame each other for adjournment. दोनों एक दूसरे को ब्लेम करे कि इनके कारण मेयर इलेक्ट नहीं हो पाया, इनके कारण नहीं हो पाया। Aftab killed his live-in partner for meeting a man through dating app. So अब ये बात आ रही है कि आफ्ताब पूनावाला who killed his live-in partner Shraddha Palkar, who was 27, and उसको this news has been very violent, उसके pieces करके, उसको मार के for a very long time, and क्योंकि श्रद्धा वॉलकर के अपने फैमिली के साथ बातचीत नहीं थी, recently उसकी मदर की डेथ हो गई थी, उसके सिर्फ फादर लाइफ थे और उनके फादर से उसकी बात नहीं हो रही थी बिकॉज हर फादर वाज अगेंस्ट श्रद्धा डेटिंग आफ्ताब। तो उस मसले को लेकर उनके बीच में बहुत वो था, तो ये बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे थे, बट मतलब आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया उसके 1-1.5-2 महीने न जाने कितने टाइम बाद। देन हर फादर वाज लाइक वेयर इज शी, ओके अब बात करें, एंड देन इट इज़ दैट इट केम टू लाइट कि श्रद्धा इज मिसिंग फॉर सो मेनी डेज एंड आफ्ताब हैड साइलेंटली किल्ड हर एंड ऑल दैट स्टफ। तो अभी बात आ रही है कि क्योंकि वो एक डेटिंग ऐप से एक दूसरे आदमी से मिली थी, इस वजह से ही वाज इन अ फिट ऑफ रेज एंड ही killed her. So this is very deadly, and I mean really, LG CM meet even as the bitter feud over control of bureaucracy continues. This is happening everywhere, as we are discussing almost every day in every paper, that in every newspaper, that whether it is Kerala, whether it is Tamil Nadu, whether it is Delhi, all of these states, especially all those states जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पे there is a riff and tiff between the state government and the governor, and यही चीज़ हो रही है दिल्ली में, that CM अरविंद केजरीवाल and the lieutenant governor विनय कुमार सक्सेना जी के बीच में काफ़ी टाइम से एक बहस छिड़ी हुई है, बट among all these फिर भी वो मिलते हैं ताकि फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल हो सके एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली चल सके। सो दिस इज देम मीटिंग। Redevelop signature view apartments. Alida Guevara says, Alida Guevara is the daughter of the very, very famous Cuban revolutionary Che Guevara, and she says that the cost of US blockade is very high for the Cubans, and ये होता भी है because Cuba is very, very close to USA,
and Cuba is of course much smaller than the US. It's much less powerful, much much less developed in every field. जैसे कि इंडिया एंड श्रीलंका है, वैसे ही क्यूबा एंड यूएसए इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इफ वी टॉक अबाउट. तो एंड बट इंडिया एंड श्रीलंका में फिर भी देर आर नॉट सो मेनी डिफरेंसेस. अब तो हो गए हैं बट स्टिल अर्लियर. But between US and Cuba there is, because US is very big compared to Cuba. It is true कि अगर कोई टेरिटरी आपके इतने पास होती है ऐसे में, एंड आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी को पता होगा अबाउट द कोल्ड वॉर एंड क्यूबा किसके साइड था. एंड इफ़ यू डोंट नो यू कैन ऑलवेज गो टू माई चैनल डीमिस्टिफाई. मैंने उसमें हमारे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 में सभी चीज़ें डिस्कस कर रखी है. It's a very interesting topic. मतलब ऐसे भी even if it is not in your syllabus you can always read it and go through it, क्योंकि बहुत interesting है. What was the Cold War, the Third World, and socialism, capitalism, communalism, everything. It's very interesting. So I mean it's history. ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ है, interesting है, ये ऐसा कुछ नहीं है. But अब ये हो चुका है. That is history. There have been killings, there has been war. But now it is history, so reading that part of history is very interesting, especially because उसका effect आज तक है. The only reason why Russia is attacking Ukraine is because of this Cold War. So you should know this background कि ये Cold War क्या था, कैसे हुआ, what was it, everything. So even if it is not in your syllabus or anything like that, for general knowledge you can always go to my channel Demystify. Go to the playlist Political Science Class 12 and you can always watch the video on that one. It will really be helpful for everything. मतलब current scenario को समझने में भी it is very important to understand that portion of history. Armed robbers attack Telugu students in Chicago, one dead. Youth outfits defy ban to hold public screenings of documentary on Modi. Mass mortality of olive ridley turtles in AP raises concerns. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोदी के ऊपर एक BBC डॉक्यूमेंट्री जो है उसके ऊपर सेंटर ने बैन लगाया था कि यू कैन नॉट वॉच इट और स्क्रीन इट. बट यूथ्स एंड स्टूडेंट्स जो है स्पेशली JNU के, उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना. एंड देखिए क्या करा गया कि स्क्रीनिंग वॉज प्रिवेंटेड बाई JNU अथॉरिटीज़. इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया गया एंड स्टूडेंट्स यू डॉक्यूमेंट्री ऑन पर्सनल डिवाइसेस इन पिच डार्कनेस. तो मतलब उसको रोकने के लिए कि ताकि वो डॉक्यूमेंट्री ना देख पाए, उसको रोकने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी तक कट ऑफ कर दिया, बिजली तक गायब कर दी. लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी नहीं माने. यूथ ने अपने पर्सनल डिवाइसेस पे पर्सनल डेटा का यूज़ करके वो डॉक्यूमेंट्री का फर्स्ट एपिसोड देखा. सो stone pelting reported. Kerala witnesses tense standoffs between the BJP and rival party workers. Okay. Mass mortality of olive ridley turtles. ये एक टाइप ऑफ टर्टल होता है जो कि अब आंध्र प्रदेश में पाया जाता है. अब ये बहुत ज़्यादा इनकी मोर्टालिटी मतलब इनकी डेथ की खबरें आ रही कि इट्स डाइंग वेरी क्विकली. इसके डेथ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज दीज आर रेयर एनिमल्स. इनके एक्सटिंक्ट हो जाने के बहुत वो रहते हैं. Okay. Editorials. Again guys, before starting I want to repeat, and I will keep repeating, please read these editorials. They are very important for you to read. They are made for you to read and they are equivalent to reading a newspaper. If एक न्यूज़पेपर में आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के छोड़ देते हैं, you're only doing 30% of the job. If you want to reach 90-100%, you will have to read these articles. Just ऐसा मान लीजिए कंपलसरी आपको पढ़ना ही है. Don't miss these. The new and dark interpretations of we the people. Okay, the raging controversy over the meaning of we the people after the speech made by the Vice President of India and Chairman Rajya Sabha Jagdeep Dhankar at the 83rd All India. I'm so sorry. I just realized कि I think मैंने ऊपर Vice President का नाम जगदीश धनकर बोला था. I'm very sorry for that. It is Jagdeep Dhankar. I don't know how I can miss that. I'm very sorry for that.
एट द 83rd ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ये हुआ था. Mr. Tanka's speech was the view that we the people essentially use primacy to elected members. तो अब ये कंट्रोवर्सी स्टर अप हो रही है बिकॉज मिस्टर जगदीप धांकर की स्पीच में जब उन्होंने वी द पीपल कहा है तो उन्होंने इसको इस तरीके से यूज़ करा जैसे वी द पीपल आर ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द पॉलिटिकल लीडर्स जो इलेक्शन से राज्यसभा से की सीट में बैठे हुए हैं. एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दैट इज एक्चुअली एब्सोल्यूट opposite of what the we the people means, of what we the people means. We the people का मतलब होता है कि all of us, all of the Indians. The only and sole meaning of we the people is that. तो you know ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, स्पेशली ताकि हमारा ये जो डेमोक्रेसी अभी चल रही है ये डेपोटिज्म की तरफ ना बढ़ पाए और टायरनी की तरफ ना बढ़ पाए. मतलब we the people का single sole only meaning is all the people of India and not only the elected people. हाँ ये words जो है they were given by the elected people at that time, but उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है. That's very clear. Okay, what is this para says? A chance for peace. India should engage Pakistan if it comes forward to normalize relations. This is again on the eternal war battle between Pakistan and India. And ये बात तो है ही सही that if Pakistan is taking a step ahead, अगर पाकिस्तान हमारे साथ अपने अच्छे relations बनाना चाह रहा है तो of course I don't think that we Indians will hesitate in doing so. We will of course go towards it only. तो ये उसी बारे में बात कर रहा है. Okay guys, read this, do not miss this. Working hand in hand to showcase India. Today on the 25th of January is the National Tourism Day, and the Ministry of Railways in partnership with the Ministry of Tourism is launching is Jagannath Yatra train package, an 8-day tour that begins from Delhi, traverses Kashi, Baidyanath Dham, Jagannath Puri, Bhubaneswar and Konark, and ends at the Vishnupat temple in Gaya. All this is linked to using Bharat Gaurav trains or theme-based tourist circuit trains to highlight India's rich cultural heritage and history. This is a very, very good, great initiative in fact for all those who like to travel. ये कितना अच्छा है that you know tourist themed trains जो है वो Ministry of Railways, Ministry of Tourism साथ मिलके कर रहे हैं, which is also known as Bharat Gaurav trains. I really like the name, the initiative. It sounds very fancy, very great. You know, Bharat Gaurav train. So this is a very nice and great scheme, especially for those who want to travel, who want to look around the culture, heritage of India. So it's a great initiative and guys, I really, मैं खुद भी जाऊँगी इसमें एक दिन, really, I'm telling you. And आप सभी को भी जाना चाहिए. And सिर्फ इसी वाले route पे नहीं, on all the rules that are being introduced, because it's amazing. And those who love to travel, especially उनके लिए तो it's very, very good. India needs to give quality exposure to its young hockey players. Okay. Now, hockey जो है वो recently हार चुकी थी अभी, you know, World Cup में, so it's about something that, but still we can do a lot. Developing schools without barriers. Again an important thing, and ये जो है वो थोड़ा सा editorial से अलग होता है because it has personal opinions into it. Editorial is factually based, जो fact होता है उसके ऊपर होता है, and ये भी fact based है, but fact based होने के बाद it is opinion based, कि facts के ऊपर किसी के क्या opinion है. That is what is this opinion page talks about. जैसे कि how can we develop schools without barriers? Now this is a personal opinion. ये हर किसी का अपना अलग होगा, हर किसी की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होगी, अपने सजेशंस होंगे. सो दिस इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट. सो इट शुड ऑल्सो बी रेड, क्योंकि ये यू नो आपको आइडियाज़ देगा, फूड फॉर थॉट देगा. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट यू नो यू शुड डू, यू शुड थिंक, एंड आपको भी नए नए प्लान्स देगा फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर. When foes unite against a common foe, Sunni groups in Kerala are coming together against the Mujahid movement. So
जो सुन्नीज एंड द शियाज एंड ऑल ऑफ दीज जो कि आपस में लड़ रहे हैं, सुन्नी ग्रुप्स में भी और जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, नाउ दे हैव कम टुगेदर ओवर द मुजाहिद मूवमेंट इन केरला. तो दिस इज रियली लाइक फोर्स, ये आपको बता दूँ, दिस कॉलम इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट रीजनल पॉलिटिक्स. सो रीजनल पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये भी जो है वो इट शुड ऑल्सो बी रेड. In TN, share of women who eat green veggies decline drastically. हरी सब्जियाँ बहुत महंगी होती जा रही है, सो देयर इज अ शार्प डिक्लाइन कि जो विमेन है वो हरी सब्जियाँ बहुत कम खा रही हैं. तो दिस इज अ स्टडी ऑफ दैट क्या हो रहा है, कितना कम खा रहे हैं, वाई, कुछ रीजन वगैरह. इट्स लाइक अ स्टडी फ्रॉम द आर्काइव्स. वियतनाम वॉर टू एंड ऑन संडे 1970. देखिए ये वियतनाम वॉर जो है दिस इज अबाउट द कोल्ड वॉर ओनली, इसीलिए आई लाइक दिस सेक्शन फ्रॉम द आर्काइव्स. इट्स अ वेरी गुड, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट लिंक करता है, हमें ईयर्स याद रखने में काफ़ी हेल्प करता है. एवरीथिंग इन द पेपर शुड बी रेड, नथिंग शुड बी लेफ्ट. अब ये है जब ब्रिटिशर्स के टाइम की, वन ब्रिटिशर्स स्टिल रूलिंग इंडिया. लंडन इंडियंस इन कॉन्फ्रेंस. सो यो yes, all of this should be read by you. Toll collection through FASTag increases this fiscal, says NHAI. NHAI is the National Highway Authority of India. 9 movies from India receive awards at the ISFFI in Bhopal. Ganjram becomes top district to provide 100 days of employment. A decrease in VC investments in Indian startups, that is venture capital. A unique Holocaust exhibition to be held in Germany. What ails the Ken-Betwa River Link project? Again, a very important one. बहुत ही important topic के ऊपर ये बात कर रहा है. Okay, Ken-Betwa River Link project, and just guys read it. Okay, what is this talking about? What is all of this? Just पढ़ के, ऐसे तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए, but if still. On January 8, the steering committee of the Ken-Betwa Link project held its third meeting in New Delhi. The Secretary of the Department of Water Resources in the Ministry of Jal Shakti related that the KBLP was a flagship project of the national government and that it is critical for the water security and socio-economic development of Bundelkhand region. The link will be in the form of a canal that will be fed by the new Dhodhan Dam on the Ken to be built within the Panna Tiger Reserve. The national government has said that the dam will generate 103 megawatts of hydroelectric power. Diversion or stopping of or enhancement of the flow of water into or outside wildlife sanctuaries park is taboo unless doing so is deemed to be necessary to improve and better manage wildlife within a sanctuary or national park. And in the case of the Panna Tiger Reserve, the Central Empowered Committee of the Supreme Court has found such a diversion to not be necessary to improve and better manage wildlife in the park. तो आप देख सकते हैं कि हाउ वन थिंग इज कनेक्टिंग टू द अदर वन. बात हो रही है डैम बनाने की, वाटर रिसोर्स के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई चीज़ इज़ गुड एंड उसके हमें सभी पॉइंट्स को देखना है, सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है. तो हियर इज़ अ मैप ऑफ द Ken-Betwa Link project which you can always view and study. Okay. Now let's come to Ayodhya, a city of paramount belief steeped in folklore, mythology and faith. Long before the Ram Janmabhoomi issue brought the place into limelight, the glory of the ancient city of Ayodhya emanated from the fact that it was coveted by rulers, exalted by believers and embraced by history. Again, a very very important article, important column of the newspaper, and it should be read. Pause it and read it. Okay, know your English. You can read this section always. Word of the day, indelible. Indelible is cannot be removed or erased.
Usage: the curry fell on my white shirt. It will now leave an indelible stain there. Something which cannot be removed from a place. Most important modernist 20th century authors: Virginia Woolf was born on January 25. Here is a quiz on English writers. Very important. ओके एंड जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, कल के क्वेश्चंस जैसे आज है तो रीड दीज क्वेश्चंस. एक बार आपने इनको पढ़ लिया, you don't need to search for the answers if it takes a lot of time. Let's stop. If you do it, it will be very good. But if you don't have that much time, just read the questions. अब आपने कल के क्विज में क्वेश्चंस पढ़े थे. Now today read the questions again, and this time the answers are also given. So in this way, it will be very easy for you to learn them. India lost access to 26 of 65 petrol points on the China border. It's very important news कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स से. पेट्रोलिंग पॉइंट्स मतलब जहाँ से जहाँ पे नज़र रखना हो, या फिर जैसे जहाँ से आसपास के एरिया में नज़र रखा जाए. पेट्रोल करना तो हम सभी को पता ही कि रात में पेट्रोलिंग होती है, मतलब राउंड्स लगाए जाते हैं वो पॉइंट्स पे. इन ईस्टर्न लद्दाख, अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च पेपर सबमिटेड लास्ट वीक, the play safe approach of the Indian Army that restricts the movement of the district administration and local people in forward areas has turned areas that were once accessible into informal buffer zones. तो this has been कि वो जो 26 पेट्रोल पॉइंट्स है वो अब चाइना के कंट्रोल में आ चुके हैं. It has lost control and access. Actually कंट्रोल में भी नहीं, एक्सेस उनसे हो गया. मतलब अब वहाँ तक जाना, उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को एक्सेस करना, वहाँ तक जाना इज नॉट पॉसिबल. तो this is not something to be very happy or proud of, but it is the reality. It's very difficult to fight so many nations at the same time. China, Pakistan, then from the eastern side there's Bangladesh, Myanmar, all these हर जगह से हमें अटैक की डर है, and everywhere we have to protect ourselves. TN plans helicopter service to the Nilgiris from Coimbatore. Purse seen fishing partially allowed outside TN waters. India bags Oscar nominations for original song and 2 documentaries. So The Elephant Whisperers is a documentary which has been nominated for the Oscars. PM discusses mental health stigma with children. We brought people together yet again through Bharat Jodo Yatra, says Rahul. In President Sisi visit, India and Egypt look to rekindle non-aligned era ties. आपको पता है कि on the 26th of January, President Abdel Fattah el-Sisi of the, he's a president of Egypt. He has arrived on Tuesday, that is on the 24th of January, and he will be here for 4 days. He will be, the main purpose of his visit to attend the Republic Day celebrations on 26th of January. For that, he is the chief guest. And apart from that, he will be staying for 4 days, okay? So that will help in rekindling non-aligned era ties. ठीक है, इजिप्ट और हम सबको पता है कि Gamal Abdel Nasser, who was the president of Egypt, he was one of the founders of the non-aligned movement along with Jawaharlal Nehru. There were 5 founding members. तो ये उसी की बात है. MLAs reject poll boycott call by ANPO in Nagaland. Trinamool offers freebies in poll manifesto for Meghalaya. Court acquits 22 accused in post Godhra riots case. Godhra riots case in the year 2002. Rijuju's ire contrasts with centre's push for transparency. Next up, we have expunged draft amendment to IT rules. Bombay High Court get 3 additional judges. BJP terms Rahul Gandhi's stand on armed forces vacillating. Again, that same Tom and Jerry game, blaming each other. Air India says action against pilot excessive. Why revive oil palm crop on Andamans, ask SC panel.
UP Police book SP leader for remarks on Ramcharitmanas. Okay, this is important news here because it's environment related. Architect V.V. Doshi passes away. India-Pakistan came close to nuclear war. Pompeo in his book. What if risk of commercial release of GM mustard is irreversible? In a first, GM mustard हमको पता है genetically modified, जिसके genes modify कर दिए गए हैं for better production और better sustainability, better durability against diseases and pesticides and all that stuff. तो GM seeds के बारे में लेकर अब काफ़ी चर्चा है. GM rice, GM mustard, whether they should be released, whether they should be in production or not. क्या वो harmful होंगे, क्या वो supernatural मतलब superficial होंगे, natural नहीं होंगे, and all that. In a first EPFO to hold mass outreach program on Friday. The EPFO is Employees Provident Fund Organization. If you like to solve this Sudoku, you should do it. It's very मतलब बहुत सिर्फ 10 मिनट लगता है, फटाफट से एक पेपर पे इसको कॉपी करिए एंड फिल करिए. And you can also solve this crossword and you can also read this faith section. Let's come to the international news. Fighting flares between Janta and rebels in southern Myanmar. बहुत चल रहा है ये भी. This is like a civilian war जैसे श्रीलंका में हुआ था, वैसे ही अब ये चीज़ है that the Janta is a group of people. मतलब Janta is a name given to the group of people and between southern Myanmar के authorities and उनके बीच में. Turkey condemns Quran protest in the Netherlands, summons envoy. Israeli high-tech workers stage protest against judicial reform plan. And doomsday clock to be updated against backdrop of Ukraine war. The doomsday clock, which represents the judgment of science and society experts about the perils to human existence, is said to be updated on Tuesday against the backdrop of the Ukraine war and other crises. The bulletin of the atomic scientists will announce at 10 a.m. local time whether the time of the clock will change. It's a very interesting and important, concept of the doomsday clock. And doomsday clock का मतलब है कि अभी current human existence situation को देखते हुए what should be the timing, मतलब कि किस level पे there are crises and all that. तो एक तरीके से उसका वो है जैसा marks देते हैं उसी तरीके से. IMF, that is International Monetary Fund, confirms India's finance assurances for Sri Lanka that yes, India had helped in financial problems to Sri Lanka and it should be repaid. Several top-level officials in Ukraine resign amid corruption allegations. Corruption के चलते हुए बहुत सारे यूक्रेन के top officials resign कर रहे हैं. Poland seeks German not to send tanks. पोलैंड चाहता है कि जर्मन जो है वो यूक्रेन में अपने टैंक्स भेजे ताकि यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट लड़ने में मदद कर सके, बट जर्मनी हैज़ रिसेंटली सेड दैट नो इट विल नॉट सेंड टैंक्स. पोलैंड चाहता है कि जर्मनी भेजे. Let's see what happens. Biden calls for ban on assault weapons. Pakistan PM issues apology to nation over power outage. US sues Google on ad tech business. Now this is financial news. FY23, that is financial year 2023, goal of $300 billion. Service exports. India may pack 11% of GDP growth in the FY24, that is financial year 2024. Toll collection via FASTag rose. Windfall tax as it hurts oil gas. Bharti Airtel raises minimum monthly recharge. Maruti net double. Vistara 1217 aircraft by 2024. Eyes more long haul flights. All these Q3 मतलब quarter 3. Okay, जैसे कि पूरे साल को 4 quarters में divide किया जाता है. Each quarter is a 3-month thing. So yes. Okay, I'm sorry. I'm slightly confused कि whether it is divided into 3 quarters or 4 quarters. तो anyways मतलब अगर 3 quarters में divide किया जाता है तो 1 quarter is of 4 months. And अगर 4 quarters में किया जाता है तो 1 quarter is of 3 months. I'm sorry I'm not able to recall कितने quarters का होता है, but yes. Now this is the sports section. बहुत सारे लोगों का favorite section होता है ये. Those who are interested. Okay.